हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम श्लोक नंबर 29 करने वाले हैं। लास्ट आई रिमेंबर वी हैड डन श्लोक नंबर 28 एंड 27, जहाँ पे वी हैड डिस्कस्ड कि कैसे जब अर्जुन अपने रिलेटिव्स को देखता है देन कैसे वो एंग्शियस फील कर रहा होता है। And shloka number 29 is also a continuation of the same message, where it goes like Vepathuscha sarire me Roma harshascha jayate Gandivam shramsate hashtat Tvakchaiva paridahyate, which means मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मबुद्धि से जन्य हैं। So here you will see that in this shloka, it's a very easy shlok where it has been described कि कैसे अर्जुना कह रहा है कि that my body is shivering, मेरा जो तन है वो कांप रहा है और इस वजह से क्योंकि उसको ऐसा लगता है there will be loss of life, अगर हम ये वॉर करते हैं तो there will be loss of life, इस चीज का अर्जुन को डर है। तो यूजुअली क्या होता है, हमारे शरीर में गूजबम्स दो टाइम से आता है। एक तब होता है जब वी आर इन फियर यानी कि डर, और एक तब होता है जब वी आर इन एक्सटेसी, दैट इज ब्लिस, यू नो। सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे अर्जुन को जो गूजबम्स आ रहे हैं दैट इज आउट ऑफ फियर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द वॉर फील्ड। फिर क्या हो रहा है कि अर्जुन फील्स एक्सट्रीमली एंग्शियस एंड इम्पेशेंट बिकॉज he is also compassionate, so he can already feel the pain of what is going to happen. So what is happening is in his anxiousness उसके हाथों से पसीना आ रहा है, जिस वजह से his grip on his धनुष which is मतलब जिसका नाम है गांडीव, तो उस बो से उसका हाथ स्लिप कर रहा है। That means कि it also means कि he's kind of losing his balance and he's losing his grip, he's losing his grounding, right? Even after being the best archer in the world, right? And then what happens is because his Gandiv is slipping from his hands, he's also sweating and he feels that his skin is burning out of the heart that is burning inside him because of the pain that is going to be caused by the material destruction in the war field of Kurukshetra. तो यहाँ पे क्या है, usually here it also depicts that Arjun's material concept is clear but not the spiritual concept. He hasn't yet understood that it is the souls that are eternal, which we will be talking about in the next shloka, where Sri Krishna tries to
explain soul in the form of energy and how it can neither be created or nor be destroyed. तो अभी इससे what do we learn? From today's lesson, we are trying to see that how, empathetic people, they think deeply about everyone in the world, for every living being. They hold that softness, and they know that somewhere or the other God's part, God's soul exists in each one of the living beings. So that is why it hurts them to see the other soul in pain. So they don't want to do that. Even they do not have any desire, any material desire to gain. Like mostly, if Arjun was a materially contaminated man, he would have easily killed someone just for his own material gain. He could have done that. But here he is not that person. He is a devotee of Sri Krishna and he surrendered to Sri Krishna. That means he is seeing Sri Krishna's parts and parcels in everyone, and he feels empathetic towards their emotions, towards their pain. So this shows the beauty of the heart of a devotee, that a devotee's heart is extremely empathetic and that they give without expecting anything in return. So today we are to learn that to be able to see God or God's form in every other living being is the best way to feel empathy for people and living beings around us, to be able to serve this world better. All right, enough of today's teaching now. Tomorrow I will see you with shloka number 30, where we will be discussing about the interesting part of what Sri Krishna tells Arjuna and what Arjuna is facing, the type of dilemma and what all are his fears. Tomorrow we'll be knowing about that. Until then, take care of yourself. Radhe Radhe.